Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the sound waves and having the frequency range from 20 Hz to 20,000 Hz. The frequency below 20 Hz are infrasonic and the frequency above 20,000 Hz are ultrasonic. Right, students? Now we have to discuss the speed of plane progressive wave. Speed of plane progressive wave. It is constant through a medium, but every particle is having the different speed when the wave passes through it, right? What is the formula for this? We know that the speed is equal to frequency into wavelength. Frequency into wavelength. And there is one more formula for the speed. Speed is also equal to omega by k. You can write v as omega upon k, because what is omega? 2 pi by t, right? And what is this? This is equal to, speed is equal to omega by k. This is 2 pi by t and this is 2 pi by lambda. So this get cancel out and it comes out to be lambda divided by t. The speed is wavelength divided by time, or you can write this as lambda into 1 upon t. This is equal to lambda into frequency, right? So speed formula, either you can write frequency into wavelength, or you can write speed as lambda divided by t, or v is equal to omega by k. Now we have to discuss the speed of transverse wave. Formula for the speed of transverse wave in a stretch string, in a stretched string, right? Formula for this is v is equal to under the root of t by m. What is t? Tension in the string. What is m? Mass per unit length. You have to prove it by the method of dimension. Prove the above formula. Prove it by the method of dimension, right? So you can say v is directly proportional to t to the power a. What is t? Tension in the string. What is m? Mass per unit length. It is mass per unit length, right? So now v is directly proportional to t to the power a and m to the power b. Now if we remove proportionality sign, you will get a constant k, t to the power a, m to the power b. This is equation number 1. Now it become m0 l1 t minus 1, right? What is this t? Tension, that is mlt minus 2 force to the power a. And what is small m? Mass per unit length. It is ml minus 1 to the power b. Now if you combine the terms containing mass, m to the power a plus b, right, l to the power a minus b, t to the power minus 2a. Now if you compare these two terms, what is the power of m here? A plus b is equal to 0. Then what is the power of L? A minus b equal to 1. T power is minus 2a equal to minus 1. So a becomes equal to 1 by 2. If a is 1 by 2, then what is b? B becomes equal to half of minus 1, that is minus of 1 by 2. Put it in first. Therefore equation 1 become v equal to k t to the power 1 by 2 divided by m to the power, or sorry, into m to the power minus 1 by 2. So you can write this as v is equal to k under the root of t by m. V equal to k under the root of t by m. This is tension and this is mass per unit length, right, student? Now the next is because the transverse waves can only pass through the solids also, so speed of transverse wave in solid is given by the formula. Speed of transverse wave in solid is given by the formula under the root of eta divided by rho. What is eta? This is modulus of rigidity. Modulus of rigidity, right? And what is rho? It is the density of the medium, density of solid. So student, you can derive it by the method of dimension also, right? Otherwise you can directly learn the formula. Is it clear? Now the speed of longitudinal waves, because we know that next is speed of longitudinal waves. क्या है ये longitudinal waves? Because it passes through all the states of matter.
liquid, solid as well as gases, right? So formula for this, it depends upon, because here in longitudinal wave compression and rarefactions are formed, right? Which coefficient of elasticity is present. According to this formula, the formula become B divided by rho. What is this? Bulk modulus of elasticity. This is bulk modulus of elasticity, right? And what is rho? It is density, because it can pass through solid, liquid as well as through the gases. Now we have to find the speed, because sound wave is a longitudinal wave. We have to find the Newton's formula for the velocity of sound in gases or in air. So Newton was the name of the scientist who gave the formula for the velocity of sound. Newton's formula for the velocity of sound in gas, or this in gases, that is the mixture of gases, that is air. What he assumed, what is the formula for this speed of sound? This is under the root of B by rho, right? That we have discussed. अब उसने क्या consider किया न्यूटन्स ने? While considering that the sound wave is traveling through air, sound travels through the air in the form of compression and rarefaction, and this process is isothermal. He considered this sound travels through the air in the form of compressions and rarefactions, and these process of formation of compression and rarefaction is an isothermal process, and this process is an isothermal process. क्या होता है isothermal process? जिसमें क्या रहे temperature? It is an isothermal process in which the temperature remains constant. How he explained that in this the temperature remains constant? He said that while when compressions are formed, then the particles of the atoms or the molecule of the gas come close to each other, right? During compressions, particles or the particles of the gas, or the atoms or molecule of the gas, they come close to each other, and heat is produced. क्योंकि उनकी closeness बढ़ गई, collisions बढ़ गई, and heat is produced. Whatever be the heat is produced, that increases its temperature. Heat produced, due to which temperature increases, and this heat is transferred to the, and this increase in heat transfer to the surrounding. कहाँ चली जाती है ये? सराउंडिंग में. दिस इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग. कहाँ चली गई ये? दिस इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, राइट? एंड ड्यूरिंग रेयरफैक्शन पार्टिकल्स मूव अवे. रेयरफैक्शंस में क्या होता है? पार्टिकल्स क्या मूव कर जाते हैं? अवे. पार्टिकल्स मूव अवे, और वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज. टेम्परेचर ऑफ द गैस decreases, and it absorb the heat from the surrounding. It absorb the heat from surrounding, so that the temperature remains from surrounding, so that temperature remains, T stands for temperature remains constant, ताकि temperature क्या रहे? constant. क्योंकि compressions में क्या होता है? देखो, अगर हम कहें ये compressions हैं, compressions में particles of the gas they come close to each other, they collide with each other, तो heat बढ़ेगी, temperature बढ़ेगा, तो वो temperature किसको transfer हो जाएगा? surrounding को. और rarefaction में particles move away, तो particles move away, their temperature decreases, they absorb the heat from it. तो यहाँ इस तरह से ये compressions and rarefactions form होते हैं. तो in this process the temperature remain constant. तो न्यूटन्स ने ये कहा, when the sound travels through the air, then this process is an isothermal process. कौन सी process है ये? Isothermal. Now
to explain it isothermal process. तो उसने कहा the formula for the speed of sound become bi divided by rho. What is bi? Isothermal bulk modulus rho. What is formula for the bulk modulus? Bulk modulus क्या था? आपको अगर याद हो, coefficient of elasticity, it is stress over volumetric, normal stress to the volumetric strain. Volumetric strain. तो अगर हम इसकी बात करते हैं, this is force upon area, राइट, और दिस इज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्रेशर, दिस इज डेल्टा वी अपॉन वी. यू कैन मार्क दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस what is the gas equation? PV is equal to nRT. अगर हम 1 mole of gas लें, temperature constant है. For isothermal process temperature is constant, gas constant is this. तो PV क्या हो जाएगा? Constant. This is PV is constant. Now differentiated, क्योंकि pressure और volume दोनों change होते हैं. Differentiated तो हम लिखेंगे इसे P into dV प्लस V इंटू डी पी. प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया हमने और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो यू कैन राइट P इंटू डी वी एज माइनस ऑफ V इंटू डी पी, राइट. अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा V अपॉन, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस. दिस इज बल्क मॉड्यूलस इज प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा V अपॉन V, राइट. तो अब हमें इसको निकालना है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ से. तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज P इंटू, दिस इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हेयर. दिस इज P इंटू माइनस डी पी इंटू वी डिवाइड बाय डी वी. स्टूडेंट यहाँ ना आप डी पी लिखना, क्योंकि दिस इज द चेंज इन प्रेशर, राइट. अब P इक्वल टू माइनस डी पी इंटू वी डिवाइड बाय डी वी. तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज माइनस डी पी डी वी डिवाइड बाय वी, और ये क्या बन गया, प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो प्रेशर इज, दिस इज द बल्क मॉड्यूलस इन विच प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आपके पास जो बल्क मॉड्यूलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस है वो किसके इक्वल हो गया, प्रेशर के इक्वल. सो फॉर्मूला फॉर दिस बिकम, पुट इट इन फर्स्ट, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, राइट. तो ये बन गया P डिवाइड बाय रो. P आपका किसका होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, और रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर. व्हाट इज P, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, क्योंकि हम एयर में देख रहे हैं. दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, एंड व्हाट इज रो, इट इज द डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है. अब हमें पता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम. दिस इज P इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज H, दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम. और इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आता है, दिस इज H इंटू रो इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 76 इंटू 10 टू दी पावर -2, 13.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, जी की वैल्यू 10 ले लें. और डेंसिटी ऑफ जो एयर होती है, दिस इज़ 1.2993 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये आपकी एवरेज डेंसिटी है एयर की. पुट दिस वैल्यू इन दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 76 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, 13.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू 10. डेंसिटी आपने एयर की लेनी है यहाँ, 1.293 इंटू, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड. तो न्यूटन्स ने क्या कैलकुलेट किया, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 280 मीटर पर सेकेंड बाय कंसिडरिंग दैट इट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस. उसने इसको क्या कंसिडर किया, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. तो अब नेक्स्ट जो उसने क्या निकाला, बट एक्सपेरिमेंटली उसने निकाली, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 280 मीटर पर सेकेंड, बट एक्सपेरिमेंटली क्या थी स्पीड ऑफ साउंड, 332 मीटर पर सेकेंड. तो उसने इसमें परसेंटेज एरर निकाला, ये इसकी ट्रू वैल्यू है. परसेंटेज एरर निकालने के लिए उसने क्या किया, 332 माइनस 280 डिवाइड बाई इट्स ट्रू वैल्यू 332 इंटू 100. तो ये आ गया 15.7%. ये एरर जो था वो बहुत लार्ज था. तो अब यानी न्यूटन्स ने जो एजम्पशंस कंसीडर की थी वो रॉन्ग थी. उसके बाद किसकी करेक्शन आई, इसको करेक्ट करने के लिए लैपलेस ने करेक्शन दी. लैपलेस करेक्शन टू द Laplace correction to the Newton's formula.
लैपलेस करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला। उसने क्या कहा कि ये जो प्रोसेस है, व्हेन द साउंड ट्रेवल्स थ्रू द एयर देन इट इज़ नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हेन साउंड passes through air, sound passes through air, then it is not an isothermal process, because Newton's assumed it is an isothermal process. It is not an isothermal process, but it is an adiabatic process. Okay, in the next video I will explain the Laplace correction, right? So how he find the exact value of speed of sound. Thank you.